Hello students. So today's topic is factorization using the third identity. So I hope you all remember what is the third identity. Let me write it down over here. So whenever we talk about third identity, it's a square minus b square is equals to a minus b multiplied by a plus b. So I have to look if the question is in this form, I just have to factorize it in these two things. Okay. If it is not in this form, I have to try to convert it in this form by taking either common, okay, or by making the numbers which are given in a perfect square way. Okay, so let's start with the first question over here. I've taken all the questions from your NCRT book only. So 4p square minus 9q square. अभी फर्स्ट स्टेप बच्चों हमें क्या करना है फर्स्ट स्टेप हम लोग को देखना है कि कैन आई टेक एनीथिंग कॉमन फ्रॉम दीज टू कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में सो 4p² 9q² पहले कॉन्स्टेंट्स देखते हैं 4 एंड 9 नथिंग इज कॉमन ओनली वन इज अ कॉमन फैक्टर p और q दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सो नथिंग इज कॉमन कॉमन कुछ नहीं है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है व्हाट वी सी इज दैट इफ दे आर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट 2 सो ये जो 4p स्क्वायर का मतलब होता है ये स्क्वायर इज ओनली विद p ये स्क्वायर 4 के साथ नहीं है प्लीज ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट ये जो स्क्वायर है दिस इज ओनली विद p मेरे को जब दोनों के साथ करना होता है तो आई हैव टू मेक इट लाइक दैट ओके सो यहाँ पे द स्क्वायर इज ओनली विद p सो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 ओके और p आपका ऑलरेडी स्क्वायर में है तो दोनों स्क्वायर में है बोथ द numbers are in both the terms और I'll say one constant and one variable are in square so मैं इसको लिखूंगी ऐसे square okay दूसरा then 9 for this 9 is a perfect square of 3 and q and then you do whole square अभी ये इसका फॉर्म आ गया इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा ए मेरा क्या है इन माई ए इज 2p सो 2p minus 3q and 2p plus 3q. This is your answer factorization done. Clear है बच्चों? Fine. अभी second part करने से पहले I'll go to the third part because they both are almost same. First and third. So यहाँ पे let's see 49x square and 39 36 sorry. So यहाँ 49 और 36 में से कुछ कॉमन है कोई कॉमन नहीं है x इधर है इधर x नहीं है सो नथिंग इज कॉमन सो आपको जस्ट कन्वर्ट करना है इनटू परफेक्ट स्क्वायर 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7 x ऑलरेडी स्क्वायर है तो 7x होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर सो व्हाट विल आई राइट इट नाउ 7x minus 6 7x plus 6 क्लियर बच्चों फाइन नाउ लेट्स मूव टू द second question second part of this question 63a square minus 112b square वही देखने में लग रहा है कि कुछ कॉमन नहीं है यस बट 63 एंड 112 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इट मींस आई हैव टू टेक समथिंग कॉमन या a square b square are perfect square but 63 and 112 are not at all a perfect square number क्या कॉमन ले सकते हैं 63 comes in which table 3 से भी डिवाइड हो रहा है बट सबसे पहला टेबल याद आता है 7 and 9 का यस और नो दिस इज डिविजिबल बाय 7 if I take out 7 common from this, okay, if I take out 7 common from this, I know this is what 7 into 9 a square minus अभी इसको भी 7 से डिवाइड करते हैं इसको और 7 से डिवाइड करो what you will get when you divide it by 7 will be 1 and 11 minus 7 4 42 6 16 b square okay so यहाँ से 7 I can take common 9 a square minus 16 b square now nothing is common but 9 is a perfect square of 3 16 is a perfect square of 4 so the next step will be what 7 3a whole square minus 4b whole square I hope this is clear now so my answer will be 3a minus 4b 3a plus 4b is this clear students आगे बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इफ यू सी यहाँ 16 भी है 114 144 भी है दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं इज दैट ओके दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं बट x5 x3 कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यस सो पहले x5 है x का पावर 5 है x का पावर 3 है सो व्हेनेवर वी हैव वेरिएबल्स और इनका पावर्स होता है तो वी टेक द लोएस्ट पावर कॉमन विच पावर वी टेक कॉमन लोएस्ट पावर एक्स क्यूब कॉमन आ गया ठीक है एक्स क्यूब आई हैव टेकन कॉमन एक्स क्यूब कॉमन आने से ये x5 में से 3 माइनस करो एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा और इधर कुछ भी नहीं बचेगा 1 रहेगा
Fine. Now, but yeah, 16 and 144. 16 and 144, can I take anything common from these also? They are perfect square. 16 4 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है. बट अगर आप देखो 4 and 12 दोनों एक ही टेबल में आते हैं. Yes, so you can take 4 common. So instead of taking 4 common, can I take 16 common directly? 16 कॉमन ले सकते हैं हम, बिकॉज 16 नाइन्स आर 144. ओके, सो यूल गेट 9 हेयर. ओके, एक्स क्यूब चला गया. इफ एक्स क्यूब हैज गॉन, सो यहाँ पे सिर्फ 1 रिमेनिंग है. सो 9 into 1 is 9 only. So it's 16 x cube, x square minus 3 square. So it's 16 x cube, x minus 3, and I'll get what? x plus 3. समझ में आ रहा है बच्चों? If you are not getting, you have to send me comments that you didn't get, then I'll solve it again and try to explain you in another way. Okay, but common लेना is very important. If you won't take this 16 common, let's say, okay, आप 16 common नहीं लेते, आप इसको ऐसे solve कर दो. by chance आपने x cube common लिया, 16 x square minus 144. So and you solve it like that. ये 4x square हो गया और ये 12 square हो गया. Fine. So you'll write x cube, 4x minus 12, 4x plus 12. And if you leave your answer like that, this will be wrong, because this 4 can also be taken common. तो आपको फिर से 4 common लेना होगा यहाँ से भी, x minus 3, और इस वाले part से भी you have to take 4 common, which will be x plus 3. So 4 into 4, 16, 16 x cube, x minus 3, x plus 3. This way you have to do. Okay, if you forget to take 16 common. So always take care of that if you have a something common, take out that common first. Okay, do not leave it inside. Is that clear? Let's do this question, very important question. थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये question, but I'll try to explain you. There are two ways of doing, but I'll use only this identity here. So this whole thing is A, this whole thing is B. Okay, perfect square है दोनों. So A minus B, whenever you have minus, take it in brackets. Then you write A plus B. Okay, open करते हैं इसका round bracket. L plus M minus L minus minus, it will become plus. Fine. यहाँ पे L plus L 2L, M plus M minus M cancel हो गया, 0 हो गया. Fine. Here L L cancel, MM 2M into 2L. So answer is 4ML. Is it clear? Very easy step. You just have to do A minus B, A plus B. So whenever you do minus, in that case you have to just take care of the bracket, because you have to open bracket and change the sign inside if there is a change. Okay. Okay. Let's move to the sixth question. Can I take anything common? 9, 16. No common factor. There is variable here only, no variable here, so no common factor. So 9 is a perfect square of 3. So 3xy whole square and 4 square. So what can I write it as? 3xy minus 4, 3xy plus 4. Okay students. Seventh question पे move करते हैं. अभी you have z as a perfect square. यहाँ पे square तो बहुत है, दो square है, but is it a perfect square? Yes. ये identity remember, this is the second identity. A minus b whole square और x minus y whole square क्या होता है? X square minus 2xy plus y square. So this is given, you can write it back it like this. So you write it as x minus y whole square minus z square. Okay. So now again the same identity, a minus b, a plus b. That is done. Okay, you have to take care of this sign. Now let's move to the eighth question. Over here now, what to do? Fine. Now you can see a lot of squares. ये भी square है, ये भी square है, ये भी square है. सारे perfect square नजर आ रहे हैं. Yes. This I can write it as 5a whole square minus 2b whole square plus 28. Can I write it as 2 into 2b? Okay, उसके बाद मैं पहले इसको लिखती हूँ. 49 is 7c whole square into 7c. Okay, now ये तो 5a whole square is okay, but when you see this part, you take minus sign common from here. It is 2b whole square minus 2 into 2b into 7c plus 7c whole square. What is this? A square minus 2ab plus b square. It's an identity. What identity?
A second identity, a square minus 2ab plus b square. So a is 2b and b is 7c. Okay. So I got now in the it is in the form of third identity. You have converted this part. I've taken negative sign common. Why I have not used these three terms? Because यहाँ पे a b है, यहाँ जो variable है that is bc. As the variable bc was bc, so I chose to use these three terms and make them into the identity. तो आपको जो second term middle term वाला होता है उसको देखना है उसमें variables क्या आ रहे हैं. Based on that you decide कि which whole square terms you will use. Okay. Now next step, it's a square minus b square. So a minus b and a plus b. Okay. In case of plus, you don't have to put bracket because it can be solved easily. But in case of minus, you have to put bracket because जब minus होता है तो अंदर sign change होते हैं. Yes. तो 5a minus 2b और minus minus plus 7c and then 5a plus 2b minus 7c. Factorize हो गया. It is done. You see, कोई like term नहीं है तो you cannot solve over here. Fine. So this is done. Now थोड़े से और harder version के question पे आते हैं. You have powers given in like this, a raised power 4 b raised power 4. अभी इसमें मुझे same identity use करना है. I have to use the same identity, a square minus b square. कैसे करेंगे हम लोग? a raised to the power 4 को क्या मैं लिख सकती हूँ? a square का square, because 2 into 2 4 होता है. Yes, ये एक्सपोनेंट्स का रूल अप्लाई करना है यहाँ पे. देन b 4 को आई कैन आई राइट दिस वे. अभी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो आई यूज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके फाइन. अभी फर्दर देखो, इसको यू कांट डू एनीथिंग, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा क्योंकि कोई आइडेंटिटी नहीं है इसके लिए. यहाँ पे फर्दर यू कैन यूज द सेम आइडेंटिटी, a माइनस बी, a प्लस बी, और ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्लियर स्टूडेंट्स? डबल डबल हो रहा है यहाँ पे. यस, आई होप दिस इज क्लियर. हाँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर विल डू. दिस इज व्हाट, p रेज टू द पावर 4 माइनस 81. p रेज टू द पावर को कैन आई राइट p स्क्वायर स्क्वायर, और ये बन गया 9 का स्क्वायर. यस, p स्क्वायर माइनस 9, p स्क्वायर प्लस 9. p प्लस वाली टर्म को यू डोंट हैव टू फैक्टराइज अगेन, बट जो माइनस वाली टर्म है, इफ यू सी दिस अगेन, कैन आई राइट इट एज 9 को 3 स्क्वायर? यस और नो? यस. सो व्हाट विल इट बिकम? p minus 3, p plus 3 and then p square plus 9. Done. Clear हो गया ये भी? I hope it is clear. Yes. So जब भी power 4 है, so what I have to do in that power 4? I have to x रेज पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड रेज पावर 4. इसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर का भी स्क्वायर. ओके फाइन, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग. इसको थोड़ा नीचे हम अच्छे से करते हैं सॉल्व, बिकॉज आई नीड मोर स्पेस फॉर दिस. माइनस वाई प्लस जेड होल 4. ओके, सो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड square and square. So first step I'll write x square minus y plus z whole square and then x square plus y plus z whole square. Okay, further let's simplify. ये फिर से हो जाएगा क्या? x minus y plus z and this will become x plus y plus z and this thing will be x square plus y plus z whole square. Okay, ओपन करेंगे हम ब्रैकेट. सो x माइनस वाई माइनस जेड एंड दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड. इसको एज इट इज लिख देंगे. फाइन. इफ यू वांट यू कैन ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई इट, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. इट इज डन. Okay students, I hope till here it is clear and you understood what we have done. Fine. So you need to practice, you need to understand the identity and then apply it by seeing common factors, by converting the given terms into perfect squares. Okay, so
First part is to take common. If there is a common factor, always take it common first. Then convert the given terms into perfect square numbers, whole squares, and then use the identity a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. Any order, a minus b into a plus b is the same thing. Okay. Okay, students. So if you understand the topic from the video, do like the video. Okay, and share it and keep practicing. Till then, bye. We'll meet in next video.